अस्सलाम वालेकुम ज़मीना साद फहाम। जी yesterday we started the volume through integration, and what were the formulas for the volume of revolution? The formulas are given your graph, your straight line, your curve is rotated 360 degree above x-axis. Its volume is pi limits x1 to x2 y squared dx, and if it is rotated 360 degree about y-axis, then its volume will be pi y1 to y2 x squared dy. G, any question about this volume of revolution? Okay, let's do question 4. So question 4 is, sketch the curve y is equal to x minus 2 whole square. So now we are going to attempt this worksheet of integration because we have completed the topic. अब हम सिर्फ इसकी कुछ practice करेंगे from the past papers. So sketch the curve y is equal to x minus 2 whole square. Saad, is this integration topic part 1? No, sir. Okay, this is not integration topic. Then which topic is this? Sir, I don't exactly remember, but I think quadratics मुझे exactly याद नहीं है. Okay जी, आप बताइए इसका ग्राफ कैसा बनेगा मरियम? Which quadratic? This is a quadratic curve. Will that quadratic curve open upward, downward, happy face, smiley face, U shape, ulta U? Which one will that be? Happy face. So happy face means it will have a minimum point. Can you tell the coordinates of minimum point, Ahmed? 2, 0. ऐसे ही है. So basically this is written x minus 2 whole square plus 0. So this is the x coordinate and this one is the y coordinate. So 2, 0 is are the coordinates of the stationary points, mean minimum point. So इसको हम लेबल करें, इसको sketch कर सकते हैं. So we know its coordinates of stationary point is 2, 0. So minimum point is 2, 0. So your curve will be like this. G. This is a sketch. आप अगर लेबल करना चाहते हैं तो ये लेबल कर सकते हैं, but for 1 mark I think this is sufficient. But अगर अहमद लेबल करना हो y intercept, can you label? So how will you find y intercept, Ayan? Put x is 0. So if you put x 0, you will get 0 minus 2 whole square, which is 4. So in case if you want to label y-intercept, with y-intercept is 4. So actually we are doing this question for second part. Second part is the region enclosed by the curve, the x-axis and the y-axis is rotated 360 degree about x-axis. Find the volume obtained giving your answer in terms of pi. जी शाज़मीना, ये बताइए कि कौन सा वॉल्यूम फाइंड करना है, कौन सा रीजन है? जी शाज़मीना एंड ज़मीना, आप मुझे सुन सकते हैं? आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे. आर यू देयर? जी सर, सॉरी, वो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन सा सोच रही हूँ. It says the region enclosed by the curve, x-axis and y-axis. So ऐसा तो कौन सर सा रीजन है जो ये छोटा सा ट्रायंगल लेफ्ट में जो बना हुआ है? जो थोड़ा क्या? सा ट्रायंगल की तरह लग रहा है लेकिन वो हाँ ट्रायंगल है नहीं? जी सर. यस. सो ये ऐसे ही है ना. वी वांट टू फाइंड this region. When this region is rotated about x-axis in 3D shape generated, we need to find the volume of that.
So what's the formula for the volume? We know the formula for the volume is pi. What are the limits? Faham, what are the limits? limits are 0 and 2. 0 to 2. And the formula is y square. So बताइए यहाँ क्या लिखूं? X minus 2 whole power what? Whole power 4. क्योंकि y square mean x minus 2, y is x minus 2 square, and then there is a whole square. So that will become x minus 2 whole power 4. So x minus 2 whole power 4 into dx. जी इसको इंटीग्रेट कीजिए एंड फाइंड द वॉल्यूम. क्या इस पे can we apply whole power rule? Ayan? Yes. That what's the derivative of base inner? It's constant. It's 1. So we can apply whole power. So if you apply the whole power rule, it says volume is equal to pi x minus 2 whole power. What's the integration, Ahmed? 5 over 5. And what's the derivative of inner? It's 1. So there is no need to write that. So the limits are 0 to 2. So we have integrated. Now put the limits. Put the limits. How to use the limits? Upper limit minus lower limit. So upper limit is 2. So अगर upper limit put करें, upper limit put करें 2 minus 2 is 0. So 0 बन जाएगा. So 0 minus lower limit is 0 minus 2 whole power 5 over 5. So what's the answer in terms of pi? 32 by 5 pi. ऐसे ही minus 2 power 5 is minus 32. Already एक minus है, so plus 32. So 32 by 5 pi. If you want to write in decimal, so it is 6.4 pi. Is this 6.4? Yes. जी क्लियर है ये? ओके जी, अब हम कोई क्वेश्चन करते हैं in which you have to find the volume rotated about y-axis. Say this is a question. In this question it says the diagram shows part of the curve x is equal to 8 over y square minus 2. Crossing the y-axis at the point A. The point B, 6, 1, lies on the curve. The shaded region is bounded by the curve, the y-axis, and the line y is equal to 1. Find the exact volume. So exact volume obtained when this shaded region is rotated through 360 degree about y-axis. So Ahmed, what's the formula for about y-axis? So now you have to integrate x with respect to y, x dy. This is the formula, and the limits are y1 to y2. So normally जब आपको x को with respect to y integrate करो तो आपको पहले x को subject बनाना होगा. But luckily in this question already जो आपने आपको उसने equation दी है that is already written for x. x उसमें subject बना हुआ है. So we don't have to do any working for that. So x को उसने पहले subject बनाया हुआ है. So फहाम x square, yes. So फहाम अगर कहीं पे ये x सब्जेक्ट नहीं बना होगा अबाउट y एक्सिस कहेगा, पहले हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे फिर. So let's use volume is pi. What are the limits?
ओके, लिमिट्स कहाँ पे हैं? एक लिमिट, लोअर लिमिट इज 1, वी नो दिस लिमिट इज 1, एंड व्हाट्स दिस लिमिट, सेकंड लिमिट? मरियम, हाउ टू फाइंड दिस लिमिट, दिस वन? बताइए, ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करें? जी, किस टॉपिक का है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बल्कि शायद ओ लेवल में भी आप, हाउ टू फाइंड y इंटरसेप्ट? put x0, put x0. If you want to find y intercept, a is on y axis, on y axis we know x is 0, so आप इस इक्वेशन में x0 पुट कर दीजिए, so 0 is equal to 8 over y square, यहां से y फाइंड करें। So 8 over y square is equal to 2, 2y square is equal to 8, y square is equal to 4. So if y square is 4 mean y is plus minus 2. ये हमें पता है y plus positive 2 है। So Saad, did you get कि how did I find the other limit? Oh yes, so you just placed x as 0, तो उससे y intercept आ गया। Yes, good. So the other limit is 2. So now we can integrate from 1 to 2. These are the limits. X square, here is x. The square of x means 8 over y square minus 2 whole square. So, Shazmina, what will be the next step? सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने वो x को इंटीग्रेट किया ना अभी? नहीं, अभी इंटीग्रेट नहीं किया। सर देखिए, ये ये फॉर्मूला है ना, देखिए ये फॉर्मूला है वॉल्यूम का, जी इसमें एक्स स्क्वायर फॉर्मूला है, आपने एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं करना होता। जिस तरह वॉल्यूम अबाउट एक्स एक्सिस के लिए वाई स्क्वायर डी एक्स होता है, आप वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट तो नहीं करते ना, आप वाई की इक्वेशन पुट करते थे उसमें, वो इन टर्म्स ऑफ एक्स बनता है। जी सर। सर हम लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड आइडेंटिटी यूज करके हम खोलेंगे। यस, अच्छा, ओपन किए बगैर क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं, आई मीन टू से यू कैन बी अप्लाई होल पावर रूल? नो, क्योंकि होल पावर रूल तब अप्लाई होगा जब इनर का डेरिवेटिव इज कांस्टेंट, बट हियर अगर आप देखिए 8 ओवर y स्क्वायर, वो इनर का डेरिवेटिव वेरिएबल बन रहा है, so we cannot apply whole power rule. Shazmina, you are right, we will open the identity, and the identity is second identity, a minus b whole square से open करें, so we cannot integrate it. So first we have to open, so a minus b whole square identity apply कीजिए, a square minus 2ab plus b square, so a square mean 64 by y4 minus 2ab mean minus 2a is 8 over y square, b is 2 plus b square mean 2 square which is 4. So simplified form we got v is equal to pi limits 1 to 2. How to integrate 64 by y4, Sat? Sir, we'll shift y4 into the numerator, तो वो -4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, नीचे -3 आ जाएगा। Okay, वो next step में करेंगे. So इस step में we are not integrating. So we'll shift y4 in the numerator, that will become 64 y power minus 4, and the second term will become 2 times 8 times 2, 32
y power minus 2. I haven't integrated in this step. So we just did the preparation to integrate. So now we can integrate. सर तो जी, ये स्टेप्स दिखाना जरूरी है या अगर हम मतलब एक या दो अगर स्टेप्स नहीं में कर सकते दिखाएंगे हैं? साथ, अगर नहीं दिखाएंगे साथ, तो ऑन एवरेज में ये कह सकता हूं कि 60% चांसेस है मिस्टेक के. ठीक है सर, ठीक है. So integration of 64y minus 4 is 64 minus 3 over minus 3. Integration of minus 32y power minus 2 is y minus 1 over minus 1. And integration of 4 is 4. 4y. क्योंकि we are integrating with respect to y now. ओके, अब हमने पुट करनी है लिमिट, लेकिन लिमिट पुट करने से पहले इसको थोड़ा सा अंदर बेहतर फॉर्म में लिख लीजिए. सो आई कैन राइट इट minus 64 by 3y cube plus 32 by y plus 4y limits 1 to 2. जी, लिमिट्स पुट कीजिए, कैलकुलेशन करें. यूज योर कैलकुलेटर एंड टेल मी द एग्जैक्ट आंसर. ये बाहर पाई भी आ रहा है, वो हमने स्किप कर दिया. सो एग्जैक्ट वॉल्यूम मीन आपको इन टर्म्स ऑफ पाई फाइंड करना है, कहीं डेसिमल की राउंडिंग ऑफ नहीं करनी, फ्रैक्शन में लिखें बेहतर है. ये मैं आंसर लिख रहा हूं. वो कह रहे हैं कि 20/3 पाई. यही है. जी सर, मेरा आ रहा है लाइक 6 होल 2 by 3 pi. हाँ, एक ही बात है. 6 होल 2/3, 20/3 6 होल 2/3. So 20/3 pi or 6 whole 2/3 pi is the exact volume when this shaded region is rotated about y-axis 360 degree. This question. The equation of the curve is given y is equal to 2 over under root x plus 1. अगर आपको कहा जाए कि this shaded region, ये जो आपको शो हो रहा है shaded region, this shaded region is rotated about y-axis 360 degree about y-axis. Find the volume generated by this shaded region. तो मुझे बताइए क्या क्या आपको करना पड़ेगा ये वॉल्यूम फाइंड करने के लिए. देखिए, वॉल्यूम अबाउट वाई एक्सिस का फॉर्मूला इज y वॉल्यूम पाई लिमिट्स y1 to y2 x square dy. जी, अहमद इज सेइंग कि पहले लिमिट्स चाहिए होंगी. क्या दोनों लिमिट्स मिसिंग है? एक गिवन है, वी हैव टू फाइंड द अदर. हाउ टू फाइंड द अदर लिमिट? वी विल पुट x 0 मेंटली पता चल रही है, 0 पुट करें अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 इज 1 so 2 so it's 2. जी 7 we have found the limits. और क्या चाहिए होगा हमें इसमें? we are just discussing this question, हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे. और इसको इंटीग्रेशन वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फहाम, what do we have to do? Limits are done, we are done with the limits. फिर later about x is तो फिर sorry y x is तो x is तो Good. फहाम is saying कि हमें, क्योंकि we need x,
सो हमें x को सब्जेक्ट बनाना होगा। चले, इसमें से x को सब्जेक्ट बनाना है हमें। इसमें से x को कैसे सब्जेक्ट बनाएंगे? हाउ टू मेक सब्जेक्ट? क्योंकि पहले स्क्वायर रूट कैंसिल करना है, सो वी हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। So if you take square, you'll get y square is equal to 4 over under root x plus 1 का under root x square will be cancelled out, so you'll get x plus 1. Then so we will get x plus 1 is equal to 4 by y square. जी मरियम, ये स्टेप समझे? x plus 1 is equal to 4 over y square. Then what is x? So x is 4 over y square minus 1. So this is x. आप ये यहाँ पे x पुट करेंगे, so it means हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई लिमिट्स 1 to 2 x square mean 4 over y square minus 1 whole square dy, और ये तकरीबन वही क्वेश्चन बन जाएगा जो भी हम ऑलमोस्ट। सो इसको भी, इसका भी फर्स्ट विल ओपन द होल स्क्वायर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। इसमें एडिशनल स्टेप क्या होगा कि आपको स्क्वायर ये यू नीड टू मेक x सब्जेक्ट। प्रीवियस क्वेश्चन में x वाज ऑलरेडी मेड सब्जेक्ट, so you will open the square, you will integrate, will put the limits and it will get the answer. Okay जी, बताइए अहमद, how will you find this shaded area? Area, not volume, area. जी अयान, yes, so we will integrate the curve first. What will be the limits for the curve? To 0. So we will integrate the curve from the limits -1 to 0. We will get this full area. Then we will integrate the line. What should be the limits for that? So आप कर्व को इंटीग्रेट कर, कर्व मीन अंडर रूट एक्स प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे, then you will integrate the line whose equation is x plus 1. So ट्राइंगल के थ्रू भी कर सकते हैं, वो इससे ज्यादा इजी है। इसको इसके केस में तो इसका एरिया 1/2 आएगा, हाँ बेस भी 1 है, हाइट भी 1 है, सो विदाउट इंटीग्रेशन भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप कर सकते हैं। तो उन एरियाज को हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, विल गेट शेडेड एरिया। जी शाज़मीना, इज दैट क्लियर? एरिया यस सर। शाज़मीना आप बताइए कि अगर यही शेडेड रीजन अगर रोटेट किया जाए अबाउट एक्स एक्सिस, हाउ विल यू फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड बाय दैट शेडेड रीजन? सर सेम वे, लेकिन हम वो फॉर्मूला चेंज कर लेंगे ना। जी बिल्कुल सेम वे, बट हम फॉर्मूला चेंज कर देंगे। अच्छा, इसी में अमेंडमेंट करनी हो तो फॉर्मूले में आपको पता है वाई स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, बाहर पाया आ जाएगा और बाहर पाया आ जाएगा, और फिर आप इसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करके वॉल्यूम्स आएंगे, 2 वॉल्यूम्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका शेडेड रीजन का वॉल्यूम आ जाएगा। सो आई होप इट्स क्लियर। योर होमवर्क इज वालेकुम अस्सलाम सर। क्वेश्चन 1 to 10 ऑफ दिस वर्कशीट, इसमें से कुछ क्वेश्चन पहले से ही आपने किए हुए हैं। ओके, मेक इट 12 नॉट 10। Question 1 to 12 of this worksheet is your homework. Thank you so much. See you tomorrow. Allah Hafiz.